This meeting is being recorded. So uncertainty में when we talk about uncertainty, मैंने आपको बताया था whenever you are measuring something, तो actual value और measured value में difference आता है, ठीक है? And that difference is basically measured as uncertainty, ठीक है? तो uncertainty कितनी किस्म की होती हैं? Basically 3 किस्म की. Actual या absolute uncertainty. When we use it, when we have an equation dealing with operators such as addition or subtraction. Okay. Similarly, the second type of uncertainty is fractional uncertainty. When we use fractional uncertainty, when we have equation dealing with multiplication and division. And finally, the third type of uncertainty is what you call percentage uncertainty, which is nothing new. If we multiply fractional uncertainty by 100, that becomes percentage uncertainty. Okay, बेटा? So पिछली क्लास में हमने टॉपिक खत्म किया था और अब हमें आज की क्लास में इसके और मजीद पास पेपर सॉल्व करना है. तो लेट मी टेक टूवर्ड्स आवर क्लास. सो शुरुआत करते हैं. Let me just go through Mohammad Mustafa Hussaini, Ryan, Ayan, Urud, Sajjad, Ibra, Iman, Ashbar, Afifa. Hello Afifa, long time no see. Amal Yunus, ठीक है, Dina, Hamza Iqbal, Rawar. बेटा I am opening the microphones, ठीक है, and so that आप अपने questions right away पूछ सकें. And let me see हमारे chats पोस्ट ओनली होना, ठीक है. चलो, okay. So this is where we were having the topic. हमने यहाँ पे I think we completed this question and this question. ये 3 सवाल हमने किए थे. अब थोड़ा सा डिस्कशन आगे लेके चलते हैं. We have I think 3 more questions. ठीक है? Okay. Thank you Afifa. It's good to have you back as well. Walaikum assalam Hamza. Okay. सवाल तरीके से पढ़ते हैं. Huzafa is in the waiting room. Walaikum assalam Ifra. Walaikum assalam Amatul. For the time T for satellite to orbit the Earth is given by. ये हमें एक इक्वेशन दी हुई है. R is the distance. M is the mass. K is the constant. Remind the SI base unit of K. Acha, one more thing. This is the reference in case you are wondering which question we are doing. Okay? So, in this case, हमारे पास, just give me a minute. If anyone is in the class for the first time and you want to get registered, you can send WhatsApp message to Sir Salman Hashmi. So, I want to add one thing, that is window capture. Just a minute. Okay. चलो आगे बढ़ते हैं. This is I did ताकि participants मेरे सामने रहें. Okay, चले आगे बढ़ते हैं. So let's start. Kindly, if you are new to the class, send your messages to chat-questions so that these questions are in front of me and I can pop these questions
in the middle of the class. Okay, chale. SI basic unit of K. Beta, where is K in this equation? K is here. And first of all, if we want to have the SI base units of K, we need to get rid of under root. And how we make sure कि हम under root से आज़ादी हासिल कर लें? How do we do? Any idea? Sir, by shifting the square. Yes, by using squaring on both sides. Okay. So here squaring on both sides. So square is cancelled by root. This becomes t square equals to k r cube upon m. Okay. Now, what we need to find out? We need to find out the base units of k, which will be equal to mt square over r cube. Okay. M is mass. So what is the SI base units of mass? You can unmute yourself. Answer me right away. Kilograms, kg. Kilograms. Yes. What are the base units of time? Seconds. Second, hours. Square है तो square लगा देंगे. What are the SI base units of radius? That is distance. Meter. Meters. Cube है तो cube लगा दिया. One thing that we do follow in base units is nothing should be in the denominator. So the base unit of K is kg m minus 3 s square. Okay, beta? Yes, sir. Cool. Let's move ahead. Chalo. Data for the particular satellite is given. Okay. This is the time to orbit, distance from Earth to satellite, and the mass of satellite. Sorry, this is the mass of Earth. Okay. What are these? These are percentage uncertainties. Okay. So इस सवाल में we will get to know how to deal with percentage uncertainties. Calculate K and its actual uncertainty. So one thing at a time, divide and rule करते हैं, पहले K निकालते हैं. I've already made the simplified formula for K. And remember one thing, wherever we'll be talking about K in this question, we'll be using this simplified formula. Understood? Now, Walaikum Assalam, Adil. Can you give a bit of recap to be able to understand? Hadi, basically what we did, we completed 3 sections of chapter 1. Section 1 was reasonable estimates, जिसमें कुछ समझने का नहीं होता है, याद करने का होता है. Section 2 was units, SI units. That is, we talked about base units in detail. And section 3 was uncertainties. Okay. So uncertainties में हम लोगों ने last class में बात की. So all of these classes are already available on my YouTube channel. The Physics Unleashed. Red color का thumbnail होगा. ठीक है. You can go through these videos because as you can see, we are at lecture number 9. So the what do we say? The recap will be a bit longer. So the best way to have the recap is to go through those videos जो कि अभी मैंने publicly available की हुई है. ठीक है? Okay. Calculate K. So let's use the simplified formula for K. K is equal to MTQ square over R cube. ठीक है?
यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, we just have to put the values, the actual values. M जगह 6.0 into 10 raised to the power 24 multiply by time 8.64 into 10 raised to the power 4 square, and here R is 4.23 into 10 raised to the power 7 cube है तो cube. So how do we put these in calculator? देखें. So first of all numerator denominator का operator लेकर आ जाए. For the case of mass, 6.0 exponent 24 multiplied by 8.64 exponent 4 whole square divided by 4.23 exponent 7 whole cube. Whenever you are giving the powers, do use brackets. Okay? And equals to go ahead kiya. What do we get as an answer? 5.91 into 10 raised to the power 11. And what are the SI base units of K? हमने अभी निकाले थे kgm minus 3 s square. ठीक है? Yes, sir. अभी मैं इसको significant figures के मुताबिक चेंज नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा वेट करें. You'll understand why I am asking you to wait. ठीक है? And kindly whatever messages you are sending, send message to chat-question. This account is in front of you. For new students, let me tell you why I joined from 4 different accounts just to have the division of labor. I have 3 screens in front of me. तो हर एक screen मुझे उसके मुताबिक काम दिखा रही है. While the 4th one sound check is by iPad, जिसके थ्रू मुझे आवाज आ रही है. तो आपसे पहले मुझे पता चलता है if we are having lagging in screen share, in sound and all the things. ठीक है भाई? ओके, आगे बढ़ते हैं. Cool. तो अब हमें अनसर्टेनिटी निकालनी है. बेटा look at this formula. Can you tell me which operator is being used here? Addition or subtraction या फिर multiplied or dividing? Dividing. Multiply and divide. ठीक है? That means we have to follow the concept of fractional uncertainty. And how do we use the concept of fractional uncertainty? Uncertainty in K upon K equals to plus minus uncertainty in M upon M plus uncertainty in time upon time. Since जो पावर होती है अनसर्टेनिटीज में वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 किया प्लस अनसर्टेनिटी इन आर ओवर आर पावर क्यूब है तो मल्टीप्लाई बाय 3 किया. बट वन प्रॉब्लम वी हैव, हमें एग्जामिनर ने अनसर्टेनिटीज कौन सी गिवन की है? परसेंटेज अनसर्टेनिटीज. यानी वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज अनसर्टेनिटीज. मतलब वी डोंट हैव टू यूज दिस, हमें यहाँ पर सबको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा. ठीक है? वी मल्टीप्लाई ऑल बाय 100. This will look somewhat like this. ठीक है? Now, what is this? Uncertainty in time over time multiply by 100 की वैल्यू ये रही. Uncertainty in R over R multiplied by 100 की वैल्यू ये रही. Uncertainty in mass over mass multiplied by 100 की वैल्यू ये रही. ठीक है? So what we'll do right now is uncertainty in K over K multiplied by 100. Okay, uncertainty in mass over mass multiplied by 100 क्या है?
2 ऐसे ही लिखा। अनसर्टेनिटी इन टाइम ओवर टाइम मल्टीप्लाई बाय 100 क्या है 0.5 एंड 3 ऐसे ही लिखा। अनसर्टेनिटी इन आर ओवर आर मल्टीप्लाई बाय 100 क्या है 1। So now uncertainty in k upon k multiplied by 100 will be 2 plus 2 multiplied by 5 0.5 is 1 plus 3 multiplied by 1 is 3. And what do we get as final answer? Plus minus 6%. But he asked what? Actual uncertainty. And he only wanted to ask this. So what we'll do? We'll make uncertainty in K as subject. That is, uncertainty in K बराबर हो जाएगा plus minus 6 multiply by K divide by 100. ठीक है? Plus minus 6 K की वैल्यू क्या निकाल ली है 5.91 exponent 11 divided by 100. ठीक है? Let's see what answer we get. 5.91 exponent 11 multiplied by 6 divided by 100. 3.54 into 10 raised to the power 10. और यूनिट वही है क्योंकि सब हमारे पास ऐसा यूनिट में kgm minus 3 s square. ठीक है? So we have found out the uncertainty and the actual value as well. Now we just have to write down it in this final place. मैंने आपको क्या बताया था whenever you are writing down the actual value with uncertainty, दो बातों का ख्याल रखना। पहली चीज सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, दूसरी चीज पावर्स जो मेंटेसा होता है जो ये एक्सपोनेंट है ये भी सेम है, और तीसरी चीज यूनिट सेम हो। तो यूनिट तो सेम है kgm minus 3 s स्क्वायर है। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं एक्सपोनेंट 11 पे लॉक करते हैं। तो बेटा अगर मैं 3.54 एक्सपोनेंट 10 को एक्सपोनेंट 11 पे लेके जाऊं तो शिफ्ट दबाकर ENG करना होगा। तो आप देखें 3.54 एक्सपोनेंट 11 क्या होगा 3.54 एक्सपोनेंट 10, तो जब मैं एक्सपोनेंट 11 पे लेके जाऊंगा तो 0.354 एक्सपोनेंट 11 होगा। राइट सर। ठीक है, अब देखें मैंने वन थिंग एट अ टाइम दोनों के स्टैंडर्ड फॉर्म्स को एक जैसा कर लिया। ये भी एक्सपोनेंट 11 पे है, ये भी एक्सपोनेंट 11 पे है। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को डील करता हूं। ठीक है, तो 5.9 लिख देंगे 10 raised to the power 11 एंड हेयर हम क्या करेंगे 3.5 को क्या करेंगे 0.35 into 10 raised to the power 11 ऑलरेडी हैज रिटन ऐसा यूनिट यानी यही वाले यूनिट है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? दिस इज हाउ वी हैव डन 4 marker question. If you have question, write in the chat box, raise your Clear, hand, sir. unmute yourself, you can ask. Yes, Amal. Clear, sir. Perfect. It's been since 7 a.m. in the morning, continuously classes. इसे पैशन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे?
सर आप अभी तक फ्रेश कैसे हैं? Because I am living my passion. This makes me happy. So if you have passion, which makes you happy, आपको थकाएगा नहीं वो. Similarly, So that's pretty admirable. yeah, thank you. अगर इस रूटीन के बाद तुम मुझे किचन में खड़ा कर दोगे ना, तो मैं ऐसा बेहतरीन खाना बना के खिलाऊंगा, उसमें भी नहीं सकूंगा मैं, क्योंकि my second passion is cooking. This is my क्या life. बात है? That beautiful life of mine. Okay, cool. Acha, one more thing you need to keep in mind that एक एक स्टेप कितना क्रिस्टल क्लियर है. ठीक है, तो आपने भी whenever you are solving past papers or whenever you are in examination writing down the answer, सफाई का खास ख्याल रखना. Each and every step should be crystal clear. And इसी बात पे शायर ने खूब कहा है, if you are new in the class, Sir Salman Hashmi is the one you need to talk. खैर, आगे बढ़ते हैं. चले. अच्छा, आई अपलोडेड होमवर्क ऑन गूगल क्लासरूम, तो उसमें एक इक्वेशन मिसिंग थी, मैंने ग्रुप पे डाल दी थी. आई होप आपको वो मिल गई होगी. चले, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन. एंड ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, बड़ा तरीके का सवाल है. स्टेप बाय स्टेप विद ईज इसको डील करेंगे. द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड flowing in time t through pipe of radius r is given by the equation. The equation is given where P is the pressure, L is the length, T depends upon the frictional effect of the liquids. An experiment is performed to determine C and the measurements are shown. Okay, so we have given with V upon T, okay, P that is pressure, R that is radius, and L that is length. Okay, calculate the value of C. अभी उसने अनसर्टेनिटी की कोई बात नहीं की, अभी he just said that you need to calculate the value of C. So we'll be using the actual values. And what are the actual values? This, 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 this. These are the actual values. But one thing I am about to do, and that is basically मैं इस इक्वेशन में थोड़ी सी चेंजिंग कर रहा हूं. और वो क्या कर रहा हूं बेटा, थोड़ी सी चेंजिंग देखिएगा. V upon T will confuse us. So what I'm doing, I'm calling another name. So V upon T is equals to X. So wherever we place V over T, we will place now X instead of V over T. So that means my equation now becomes X equals to pi P R4 upon 8 P. Okay, beta? Now let's use this equation. Calculate the value of C. चलो देखते हैं. Let's make C a subject. C equals to pi P R4 upon 8 X N. Let's put the value. The value of pi is 3.142. The value of pressure is 2.5. Okay. The value of R, that is radius, is 0.75 to power 4 over 8. The value of X is 1.20.
and the value of L is 0.25. Understood? Yes, sir. Okay. So if I solve Yes, the sir. equation like this, जरा देखिएगा 3.142 multiplied by 2.5 multiplied by 0.75 power, sorry, क्या बदतमीजी है 3.142 multiplied by 2.5 multiplied by 0.75 into 10 raised to the power 4, sorry, power 4, 8 multiplied by 1.2 multiplied by 0.25. The answer we get 1.03. Sir, don't we have to change the units? जी बेटा, Don't we have to change the units? yes, we do have to. One of the way of tell you or teach you not to do mistake is to do mistake in front of you. ये वो गलती है जो नॉर्मली स्टूडेंट करता है, ठीक है, जो गलती मैंने आपको करके दिखाई है. डोंट डू दैट. क्या गलती की है मैंने? गलती नहीं की है, बेसिकली कमी छोड़ दी है. तो यू सी इंटेंशनली मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, यहाँ पे भी जगह छोड़ी है, यहाँ पे भी जगह छोड़ी है. वाई? सुना बेटा, ये किसकी वैल्यू होती? पी की. एंड पी के साथ क्या लिखा हुआ है? p स्लैश 10 रेज़ टू द पावर 3. इसका मतलब यहाँ पर मुझे इंटू 10 रेज़ टू द पावर 3 डालना होगा, ठीक है. सिमिलरली व्हाट इज दिस? r. r is in millimeter. How do we convert millimeter to meter? By dividing it with 1000. Similarly, what is this? x. And x की पावर क्या है? स्लैश 10 रेज़ टू द पावर -6. अब ये क्वेश्चन कंप्लीट है. अब हम गलती नहीं करेंगे. चलो देखते हैं. So here, once again, 3.142 multiplied by 2.5 exponent 3 multiplied by 0.75 exponent -3 की power 4 divided by 8 multiplied by 1.2 exponent -6 multiplied by 0.25. लेंथ ऑलरेडी मीटर में है तो 0.25 को हमने कन्वर्ट नहीं किया. एंड नाउ वी गेट 1.03. अच्छा, वन मोर थिंग, जब आपको नंबर ऐसा मिले और आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, यूज द ENG 1.03 एक्सपोनेंट -3. ठीक है. Yes, sir. And do we know? अच्छा, यूनिट ऑलरेडी लिखे हैं. So this will be in two significant figures, 1.0 exponent -3. Okay. Yes, sir. What about the others? Mashallah, we have, apart from my 4 accounts, we have 18 students in the class. बाकियों Yes, के sir. inputs क्यों नहीं आ रहे? Clear है sir. That is it. ठीक जी है. सर यही आ रहा यार ये मैसेजेस मेरे पास क्यों अब आए मैसेजेस? ओके, है सर। वालेकुम अस्सलाम. सलाम किया है क्या? ओके. Can you explain step 3? अशबार, एक्सट्रीमली सॉरी, आपके जो मैसेजेस हैं वो सामने पॉपअप नहीं हो रहे थे. Which step you are talking about? You can unmute yourself.
I'll explain. सर मैं पिछले सवाल के बारे में पूछ रहा था, उसका स्टेप 3। Which question? This question? जी Okay. बेटा देखें, आपको यहां तक समझ आया? जी सर। Okay, here uncertainty in mass over mass multiplied by 100 is 2. ठीक है, तो मैंने इसकी जगह 2 पुट कर दिया. Similarly, uncertainty in time over time multiplied by 100 is 0.5. तो मैंने इसकी जगह 0.5 पुट कर दिया, जबकि ये वाला 2 ऐसे ही रहा. And similarly, uncertainty in r over r multiplied by 100 is 1. तो इसकी जगह 1 प्लेस कर दिया, जबकि ये वाला 3 ऐसे ही रहा. Understood? सर हम परसेंटेजेस को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? They are already multiplied by 100. मतलब 0.5% is basically uncertainty t over t multiplied by 100. परसेंटेज का साइन ही तब आता है when you have multiplied by 100. ठीक है? ओके सर, थैंक यू। सर यस बेटा, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये 2 और 3 कहाँ से आया? 2 और 3 इस सवाल में. जी इसी सवाल में। ओके, 2 और 3 कहाँ से? अच्छा 2 और 3, अच्छा ओके ओके बेटा. ये देखें, पावर है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना, जी तो अनसर्टेनिटी में वो मल्टीप्लाई हो गया. क्यूब है अच्छा सही तो सही अनसर्टेनिटी में समझ गया। मल्टीप्लाई हो गया. ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ पावर रेजिंग टू पावर यस सही है। यस ओके. हमें नोट्स बनाने हैं या आप देंगे? बेटा जोसेफा, इफ यू हैड वर्कबुक्स इन ओ लेवल, तो हमारी एएस की भी थ्योरी की वर्कबुक है, जबकि पास पेपर्स मैं प्रीफर करता हूँ, इफ यू आर इन पाकिस्तान यू डू फॉलो रीड एंड राइट पब्लिकेशन टॉपिकल पास पेपर्स. ठीक है, तो इफ यू वांट वर्कबुक आप सर मुस्तकीम से कांटेक्ट कर लीजिएगा, वो आपको समझा देंगे. अदरवाइज इफ यू आर रिलाइंग ऑन पीडीएफ, तो जिस तरह पिछले साल था, हमारे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक होगा. चलें आगे बढ़ते हैं. ओके sir, why did you write 1.0 not? Ashbar, we have to write our answer to 2 significant figures. Okay, so that is why 1.03 becomes 3 significant figures. अब बोल रहे हैं calculate the uncertainty in C. चलो, इक्वेशन कौन सी है? Multiply divide, यानी we have to go through the concept of fractional uncertainty. चलो, uncertainty in C upon C बराबर है pi is number, it won't be uncertain. Uncertainty in pressure upon pressure plus uncertainty in R over R. पावर 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4. मैं इस इक्वेशन को देखते हुए ये इक्वेशन बना रहा हूं. ठीक है, प्लस 8 is number. No matter what happens, uncertainties are always added. भले वो मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो रही हो, ऐड हो रही हो, सब्ट्रैक्ट हो रही हो, we always add uncertainty. So it is number, it won't be uncertain. X, uncertainty X upon X and uncertainty L over L. ठीक है, what we need to find out this. तो C यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Uncertainty in C equals to प्लस माइनस, कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है. सबसे पहले आई जस्ट सिंप्लीफाइड. ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं. अब वैल्यूज पुट करते हैं. आई डोंट हैव टू मूव अगेन एंड अगेन, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. ओके, नाउ uncertainty in C will be plus minus
अनसर्टेनिटी इन पी क्या है, ये रही 0.05, और पी एक्चुअल वैल्यू क्या है 2.50, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन आर क्या है, ये रही 0.01, डिवाइड बाय आर इटसेल्फ क्या है 0.75, प्लस अनसर्टेनिटी इन एक्स क्या है, ये रही, व्हाट इज एक्स इटसेल्फ 1.2, प्लस अनसर्टेनिटी इन एल क्या है 0.0001, एक्स इटसेल्फ क्या है, सॉरी एल इटसेल्फ क्या है 0.35। एमसीई हमने क्या निकाला था, whenever you are writing down the answers, तो बेटा आप हमेशा एक्चुअल वैल्यू लिखा करें, ठीक है, हमेशा एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, तो 1.0 नहीं लिखेंगे, 1.03 into 10 raised to power minus 3 लिखेंगे। अब एक सवाल नॉर्मली जो यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं, सर यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं किया, तो पावर है -6, तो x की जगह -6 क्यों नहीं डाला, एनी आइडिया क्यों नहीं किया ऐसा मैंने, कन्वर्ट क्यों नहीं किया, एनी आइडिया? क्योंकि हम इसकी अनसर्टेनिटी निकाल रहे हैं और ये ट्रू वैल्यू है प्रॉबेबली। नो, जो चेंज आपको ऊपर करना होगा, बिकॉज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से पी की पावर क्या है एक्सपोनेंट 3, तो अगर आपको ऊपर एक्सपोनेंट 3 प्लेस करना है तो इसके साथ भी एक्सपोनेंट 3 प्लेस करना होगा, इट विल कैंसिल आउट। सिमिलरली इफ यू आर और टॉकिंग अबाउट आर, मिलीमीटर से मीटर में जाओगे तो दोनों को कन्वर्ट करना होगा, इट विल कैंसिल आउट। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एक्स, -6 यहाँ भी करना होगा, -6 यहाँ पे भी करना होगा, दे विल कैंसिल आउट, तो वी डोंट हैव टू, ठीक है, दैट इज वाई मैंने लिखा ही नहीं, अपना टाइम बचा है, ओके चलो, तो नाउ वी डोंट नीड इट, चलो कैलकुलेट करते हैं। uh 0.05 divided by 3.5, 4 multiplied by 0.01 divided by 0.75, 0.01 over 1.2। देखिए मैं एक सिंगल स्टेप में कैसे कर रहा हूँ, 0.001 over 0.250 multiplied by 1.03 exponent -3, तो ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, क्रॉस चेक करिएगा आप लोग, अपने बाद भी कैलकुलेशन करके देखें, एंड if I want to have this answer a bit understandable, what do I do? ENG का बटन दबा दिया, तो 88 एक्सपोनेंट -6 आ रहा है, या एक काम करें 0.08 एक्सपोनेंट -3 कर दें, बात एक ही है, 0.088 exponent -3। Now we have to write our answer to two significant figures, तो क्या करेंगे 0.090 exponent -3, ठीक है, so this is our uncertainty in C। Let me know if the value is correctly calculated, अगर कोई गलती है तो भी बताएं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन थी, गलती होने के मुझसे भी चांसेस हो सकते हैं। क्लियर है?
Clear as sir. Did you press Shift E and G? क्या बेटा शिफ्ट ईएनजी क्या कह रहे हैं आप? We got the answer in a long form, right? So you pressed Shift E and G to make it more understandable. फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लाइक ये आंसर आया था. आई pressed ENG. So ENG gave me an answer to -6. But my actual C is in exponent -3. So shift ENG. When you have to make your power more positive, you put shift ENG. And when you want to make your power a bit negative, you just press ENG. Okay? Okay, understood. So Josefa, yes, they are already available on YouTube channel. नाम change हो गया YouTube channel का. It's The Physics Unleashed now. ठीक है? Now आगे बढ़ते हैं. State the value of C and its uncertainty to appropriate number of significant figures. What does he mean by appropriate number? We have already following the appropriate number of significant figures condition. 2 SFs, 2 significant figures. हम already follow कर रहे हैं. Don't tell us. Okay? चलो. C की वैल्यू क्या है? 1.0 into 10 raised to the power -3. And uncertainty क्या है ये? 0.090 into 10 raised to the power -3. ठीक है? और you can also leave that answer 2.088. ये भी चलेगा. तो 0.088 को leave कर देते हैं. This makes more sense. Because these two are non-significant. These two are significant. So 2 SS, significant, 2 SS. दोनों में 2 SS है. पावर भी दोनों की सेम है. तो हमारी कंडीशन दोनों वैलिड हो रही है. This is how we completed our question. Okay, beta? Clear, sir. Perfect. What about the others? Clear from my side as well, sir. Clear, sir. Okay. Okay, Fra. Well, I guess in my worksheet, this is the last question. इसके बाद खत्म होने के बाद we'll go through paper yearly past papers. Measurements made for sample of metal wire are shown in figure 1.1. Okay. State the appropriate instrument. State means you can provide as concise as possible answer. Used to make these measurements. Length. Beta, just convert this length into meter by dividing it by 1000. It becomes 1.75 meter. So can this length be measured by meter rule? Yes, Ujafa, सिर्फ 9 क्लासेस हुई. क्या ये मीटर रूल से मेजर हो सकता है? No. Yes, it can't be measured by meter rule. So meter rule से ऊपर कौन आता है? Vernier calipers. It's measuring tape. वर्नियर कैलिपर तो बहुत छोटी रीडिंग को मेजर करता है. So it's measuring tape. Next, diameter. The diameter is in terms of millimeter 0.38 exponent -3. So this is a very small length that should Sir, be measured by, micrometers go what? yes, micrometers to gauge. Sir, vernier calipers किसके लिए इस्तेमाल होता है? Couldn't we use that as well? Who's asking the question? Ayan.
आयान आज तुम्हारा खतरनाक वाला डे है कि तुम डाउन लग रहे हो। सर क्या बोले, डाउन तो लग मुंह में। अच्छा भाई देखे, याद है हमने ओ लेवल्स में एक डिटेल डिस्कशन किया था। ये टेबल, तो इस टेबल के मुताबिक वी विल चूज आर इंस्ट्रूमेंट। So if you want to use vernier caliper, keep this in mind. It can measure up to 2 to 10 centimeters length and internal diameter. Micrometer can measure less than 2 centimeters. ठीक है? And that सही is सर, और why हमारे पास this is less than 2 centimeters. तो इसीलिए मैंने micrometer choose किया. And which instrument is used to measure resistance? resistor. Yeah, combination of ammeter and voltmeter. Okay. voltmeter. Ammeter measures current and voltmeter measures voltage. R equals to V over I. हम ये लिख सकते हैं. Or either if it's just about the instrument, तो बेटा आप ohm meter भी लिख सकते हो. Ohm meter. Just write ohm meter or the combination of ammeter and voltmeter. वोल्टमीटर एमीटर लिखे हैं तो पूरी बात करिएगा, फॉर्मूला भी मेंशन करिएगा. ठीक है? नाउ नहीं नहीं बेटा, बीमार नहीं हुआ है, बस थका हुआ है बेचारा. मेहनत कश नौजवान है हमारा. ओके, आगे बढ़ते हैं. शो दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल टू बी कैलकुलेटेड. हमें रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है इतनी. तो अभी तक आपने रेजिस्टिविटी नहीं पढ़ी, यू डोंट नो व्हाट रेजिस्टिविटी इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टिविटी. तो हमने बेस यूनिट्स में देखा था, तो ये फॉर्मूला होता है रेजिस्टिविटी का. दिस इज रेजिस्टिविटी which is equals to resistance times cross sectional area divided by length. तो we are given with diameter, तो हमें क्या करना होगा, एरिया को डायमीटर तक ब्रेक डाउन करना होगा. तो वायर की शेप कैसी होती है देखें, वायर लुक्स लाइक दिस. ठीक है? एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर इज हैविंग द शेप ऑफ सर्कल. ठीक है? दैट मीन्स द क्रॉस सेक्शनल एरिया में हम एरिया ऑफ सर्कल पुट करेंगे लाइक दिस. आर ऐसे रहा, और एरिया की जगह पाई आर स्क्वायर आया अपॉन एल. बट वी आर नॉट गिवन विद रेडियस, वी आर गिवन विद डायामीटर. तो आर की जगह डी अपॉन 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाया, आर पाई डी स्क्वायर अपॉन 4. डी का स्क्वायर हो गया डी स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर हो गया 4. Now we have simplified the formula for resistivity. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. Next, let's put the values. R is 7.5. Pi is 3.142 and diameter is 0.38 exponent minus 3. स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, डिवाइडेड बाय 4. L is 1.75 मीटर. मैंने पहले ही इनको सबको ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट कर लिया था. So let's see what answer we get.
7.5 multiplied by 3.142 multiplied by 0.38 exponent minus 3 square over 4 multiplied by 1.75. The answer we get is this much long, which is 486.11 exponent minus 9, यानी 4.86 एक्सपोनेंट माइनस 7 आ गया. यूनिट है ओम मीटर. तो जो उन्हें हमसे चाहिए था हमने वो फाइंड आउट कर दिखा दिया. जी बेटा अमल. ओके, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द रेजिस्टिविटी. अब अनसर्टेनिटी पूछ रहा है. तो बेटा मैंने आपको बताया था whenever you are finding uncertainty simplified formula यूज किया करें. ठीक है. तो here डिवाइड मल्टीप्लाई का फॉर्मूला है. तो अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टिविटी अपॉन रेजिस्टिविटी इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस प्लस अनसर्टेनिटी हमेशा एड अप होती हैं. अनसर्टेनिटी इन डायमीटर अपॉन डायमीटर स्क्वायर है तो पावर 2 आ जाएगी प्लस 4 नंबर है, नो अनसर्टेनिटी and length is like this. He said uncertainty in resistivity, यानी he is only interested in this. तो रो यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा. Now let's put the values. I don't have to move back and forth. मैं इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ. Okay, uncertainty in resistivity plus minus uncertainty in R क्या है? ये रहे. And R itself ये रहा. 0.2 over 7.5 plus 2 multiplied by diameter 0.01 and actual diameter 0.38. अच्छा ये वैल्यू ना पुट करिएगा क्योंकि इसको भी फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो अनसर्टेनिटीज में जो कन्वर्ट आप करते हैं वो तो कैंसिल आउट हो जाता है. दोनों मिलीमीटर की वैल्यू यूज कर रहा हूँ. प्लस अनसर्टेनिटी लेंथ ये भी मिलीमीटर और एक्चुअल लेंथ ये भी मिलीमीटर. रेजिस्टिविटी 4.86 एक्सपोनेंट माइनस 7 हमने प्रूफ की है. ठीक है. तो लेट्स कैलकुलेट 0.2 over 7.5. 2 multiplied by 0.001 divided by Sir, 0.2327. 0.23. 0.27. 0.27. चले देखते हैं. ये आंसर आ रहा है. मैंने कोई गलती की होगी. एक आध आप लोग भी जो है साथ में कैलकुलेशन रखें बिकॉज कैलकुलेशंस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं तो मुझसे भी गलती हो सकती है. ओ सर, मैंने वो 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, गलती मेरी है. ओके अमल, आप ये आंसर बता रही हैं. मेरा भी सेम ही आंसर आ रहा है सर, अच्छा 0.39. तो आपको तो गलती समझ में आ गई, इसका मतलब ये आंसर सही नहीं. ओके तो दिस इज व्हाट 16.35 एक्सपोनेंट माइनस 9 यानी
we can say that exponent माइनस 7 पे हो जाएगा 0.163 एक्सपोनेंट माइनस 7। यही आ रहा है, जल्दी से कंफर्म करें। Kindly have calculator in your hand, do solve। कि आप जब तक खुद सॉल्व नहीं करेंगे सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट नहीं आएगा। जी सर बेटा, मेरा 0.39 आ रहा है। अभी भी 0.39 आ रहा है। जी चल लेट मी सी, मुझसे तो कोई मिस्टेक नहीं हुई। 0.2 डिवाइड बाय 7.5, 2 मल्टीप्लाई बाय, सर ओ आपने ये गलती 0.00 हुई है, किया। ये गलती हुई है। सर मेरा 3 पॉइंट सर मेरा आ रहा है 3.93 इंटू 10 रेज टू पावर -8। मुझे दिख गया, और मुझसे शायद नेगेटिव गलती टू हो पावर गई। 7 भी तो करना पड़ता है भाई। सर 0.2 जीरो डिवाइडेड पॉइंट बाय जीरो 0.39 0.39 नहीं आ रहा है, ठीक है। मुझसे यहाँ पे गलती हुई थी, ये गलती हुई थी। दैट इज वाई मैं पूछ रहा था, द कैलकुलेशन आर कॉम्प्लेक्स, सो डोंट थिंक आई एम ऑलवेज राइट। दिन की 14th-15th क्लास के बाद आई कैन मेक मिस्टेक्स। ओके 4.86, और मुझे भी फील नहीं आ रही थी कि जवाब सही है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था बार बार। तो 39.37 या 0.393 into 10 raised to the power -7 ohm meter. This is the uncertainty in resistivity. ठीक है, कूल। नाउ चले, अब अनसर्टेनिटी लिखनी है, तो अनसर्टेनिटी लिखेंगे हम 0.39, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, एक्सपोनेंट -7। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। clear, sir. Ashbar is asking, okay बेटा, what is the difference between actual uncertainty and uncertainty? दोनों चीजें एक ही है। When the examiner is saying uncertainty, he's basically targeting actual uncertainty or absolute uncertainty। ठीक है, cool। तो सर एब्सोल्यूट, एक्चुअल और अनसर्टेनिटी ये तीनों चीजें सेम टू सेम थिंग एक होती ही हैं। चीज के दो तीन नाम है। वेरी नाइस, माशाल्लाह, सही है, समझ गया। सर आप मेरा क्वेश्चन भी आंसर कर दें प्लीज, जो था क्वेश्चन हाँ चलें चलें, ठीक है। If you guys have any question, you can ask, and we can conclude the class. All clear? ऑफ कोर्स सर, आप समझा रहे हैं तो क्लियर ही तो होगा। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे। Afifa, how do I adopt from O level physics to AS level physics? Because I'm currently suffering. अफीफा, सीन पता है क्या है? सीन ये है कि the reason why I'm having so slow pace is just to cope up the level. आपको पता है पिछले सेक्शन के हमने 3 दिन सिर्फ पास पेपर्स पे गुजारे हैं, so that you can cope up with the level and so that past papers की भी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाए। I told you in the beginning of the classes that हमारा AS का theoretically syllabus बहुत छोटा है। 4 months will be for the syllabus coverage and the 4 months tentative will be for the past papers. So that is why I'm focusing more on past papers in the beginning. Slowly and gradually चलेंगे तो माइंड उसे absorb करता जाएगा। ठीक है, तो आराम आराम से चलें,
बी रेगुलर इन द क्लास, जितने भी आपने लेक्चर्स मिस किए हैं उन्हें यूट्यूब से गो थ्रू करें, एवरीथिंग विल बी गुड इंशाल्लाह। ठीक है, अमल, लेट मी आस्क माय टीम। ठीक है, यस सज्जाद।